Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. I'm Ashish Bhargav and welcome to another episode of Daily News Analysis that we do from Monday to Friday at 11:30 a.m. In this newspaper analysis, we discuss about all the important events and majorly we discuss about the Hindu and Indian Express. And I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. And in daily newspaper analysis, we discuss about national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conference, and miscellaneous. And apart from that, we also discuss from Supreme Court verdict, which is very, very important, especially for the amendments, laws, so that the students who are preparing for the law entrance exam that can get who can get benefit from watching this. And we also discuss about state initiative as well. So here is the quote of the day: if your voice is high, only a few people will hear. If your thought is high, then many people will listen. And to inculcate this thought process, what exactly you need to do, you have to develop the temperament to read the newspaper, so that the questions that is based on current affairs that you can solve in your exam. And every day may not be good, but there is something good in every day. And just one small positive thought in the morning that can change your whole day. And study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night. Just remember that the feeling of success is the best thing in the entire world. And we have taken initiative. Questions of the day, that is very, very important, because that gives you the immense idea like what kind of questions in your exam that is based on current affairs that can be asked. And now we discuss the very first article in today is, here it is. So the missing deputy speaker, the post, and what the constitution says. So Supreme Court, which is issued notice to the center and 5 states, especially in the Rajasthan, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Jharkhand, over the failure of elected deputy speaker. So we'll get to know that what kind of constitutional provision, and this post has been lying vacant in the 5 state assemblies, as well as the constitution between 4 years and almost 1 year ago. So what is the constitution say about the deputy speaker? So if you talk about the constitution provision to electing the deputy speaker, so Article 93 says that House of the People shall, as soon as may be, choose 2 members to be speaker and deputy speaker, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, the House shall choose another member. And Article 178 contains the corresponding position of speaker and deputy speaker of the legislative assembly of a state. So is it mandatory to you can say it is mandatory to have a deputy speaker? Yes. Constitutional expert points out that both Article 93 and 178 use the word shall, which indicating that election of a speaker and deputy speaker is mandatory under the constitution. So how soon must the deputy speaker be elected? So Article 93 and 178, but they do not lay down the specific time frame. So there is no time frame has been mentioned in the constitution. Rule 8 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha say that election of deputy speaker shall be held on such states as the speaker may fix. And how was the post of deputy speaker envisaged? On May 19th, 1941, before elections in our country, before got freedom. So H.V. Kamnath argued in the Constitution Assembly that if the speaker resigns, it will be far better if we address his resignation to the president and not to the deputy speaker, because the deputy speaker holds office subordinating to him. And that's why Dr. B.R. Ambedkar disagreed and pointed out that person normally tenders his resignation to a person who has appointed him. The speaker and deputy speaker are appointed or chosen or elected by the House. Consequently, these 2 people, if they want to resign, must tender their resignation to the House, which is appointing authority. So do the powers of speaker extended to the deputy speaker as well? So what is the constitutional provision? So if you talk about Article 95, which clearly says that
while the office of speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the deputy speaker. So in general, the deputy speaker has the same power as the speaker when presiding over a sitting of the house. All references to the speaker in the rules to be deemed to be reference to the deputy speaker when he preside. One more thing that we need to understand, it has been repeatedly held that no appeal lies to the speaker against ruling given by the deputy speaker or any person presiding over the house in the absence of a speaker. One more thing we need to understand, can the court intervene the cases of delay in electing of deputy speaker? So there is no precedent of court forcing the legislature to elect the deputy speaker. However, experts say that the court do have jurisdiction at least inquire into why there has been a no elections to the post of deputy speaker, since the constitution does envisage an election as soon as maybe. Because if you talk about the structure of our state, so state government have three format. The way first is legislature, second is executive, third is judicial branch. In a state government, to legislate branch to make laws, in executive to pass law made by legislature, judicial branch to punish lawbreaker, and here we can say legislative council and legislative assembly. If we talk about executive branch, here is governor, chief minister, state council of minister. But while we talk about judicial branch, here is the high court and district court. Now, executive branch consists of governor, chief minister and state council of minister including cabinet minister. While we talk about judicial branch, that is consists of high court and district court. If we talk about legislature branch, which is council and assembly, where is a bicameralism. So bicameralism, which means that the state where legislative assembly also and legislative council also, that we can say that is a bicameralism. So bicameralism, which means clearly we can say that any states where have a assembly also and council also, assembly plus council, that is we can say that legislative council, that is bicameralism. Like we can say Karnataka, like Andhra, like Uttar Pradesh, Telangana, Maharashtra, Bihar. These states have assembly also and council also. In short, that we can say that these states have Vidhan Sabha also and Vidhan Parishad also. Why I am emphasizing, sometimes in your exam they will ask you about the Sabha and Parishad. So that's why we need to remember these states have Karnataka, Andhra, Telangana, Uttar Pradesh. These states have a bicameralism. That's why we use the word legislative council and assembly. So state government, how they work, so the legislature which make law, executive branch to pass law, and judicial to punish lawbreaker. I hope this one is clear for each and everyone here. Now this article, second article, time to foster defense export ecosystem. So what exactly we need to understand in this article, what is the important takeaways for the exam. So launcher and FCS spares for radar, because this article is talking about like how we need to foster defense export, and after successfully executing policy reforms and strengthening the business ecosystem, it's time to improve the export ecosystem. India private as well as public sector requires dedicated export infrastructure, trade support and R&D policy, which is research and development. So the three essential element to foster the export ecosystem is, first we can say putting in place the required export infrastructure, and this can be a training also, and second we can say that a dedicated export promotion council specific to the needs of defense sector, where export promotion offers have an understanding of the policy. Third, we can say that NSG, which is called Nuclear Supplier Group. So an exposure to the international treaties, protocol, like similarly we can say that Nuclear Supplier Group and control regime, and we can say India's UN mandated and other international committees to obligation of EPC, right?
official that will help to India's export ecosystem. Secondly, what our country can do this to Indian defense sector needs dedicated trade support from regulation agencies for the speeding of approval, both related production and export compliances. Third, we can say that the country needs defense industry still needs go longer augmenting the R&D infrastructure, research and development, and this is what we have discussed in the budget also, because government spending more than 7% in the defense ecosystem. So that another dimension that we can say that R&D infrastructure, that India defense industry should be also be willing to share it with prospective friendly buyers against potential export orders. If you talk about like global defense budget rising, the India defense sector needs to be tapped the growing opportunities both in the fragmented markets and beyond also. So that that would be strengthen the country's securities and as well people and for the welfare and well-being of the people as well. Because we have many initiatives for the defense sector like Tejas and BrahMos, like Sarang, low combat helicopters and Indian missions. That is a great initiative that is taken by the Indian government as well, right? Now, moving further, leveraging Jammu and Kashmir lithium reserve. Basically, what is the significance of new 5.9 tons inferred resource lithium discovered in Jammu and Kashmir? What are the environmental concerns around its extraction procedure? What are the geostrategic implications considering the geopolitical system in this area? So that we have to think about lithium ion batteries are used in cell phones, solar panels and electric vehicles, all of which are crucial in green economy. And recently the World Bank also suggests that the demand for critical metals such as lithium and cobalt are expected to nearly 50% by 2050. And that great reserve we found in the Jammu and Kashmir. That would be good for our country's export is concerned. Now, here is WHO confirms Marburg disease outbreak symptom. Again, we can see the live mint, WHO Africa, WHO to hold emergency meeting of and Marburg disease here definition origin. So all of the newspaper has followed this one. Now we can see what is Marburg viral disease. So World Health Organization recently said that Equatorial Guinea had confirmed first ever outbreak in Marburg disease. What is it? What is MBD, earlier known as Marburg hemorrhage fever, is a rare but severe hemorrhage fever that affect both people and non-human primates. And MBD is caused by Marburg virus, is genetically unique zoonotic disease. What is zoonotic diseases? Zoonotic, which means from animal borne disease. That is known to be a zoonotic disease. So Marburg, that is the first virus recognized in 1967 when outbreaks of hemorrhagic fever occurred simultaneously in laboratories in Marburg and Frankfurt. Here we can see in that places is in spreading this virus, as we can see in this map. Next article talking about retail inflation rise to 6.52% in January, a 3-month high. Wholesale inflation is to 4.7% January. Disturbing dilation. So all these things is talking about consumer price index, CPI and WPI. Wholesale price index and consumer price index. So how the RBI monetary policy is governing and curbing the inflation in our country with the help of consumer price index and wholesale price index. So we will got to know first what exactly is inflation, then we got to know that how the RBI is monitor this. Inflation simply means the rise of price and most goods and services of daily or common use such as food, clothing, housing, recreation,
transport, consumer staples, etc. And inflation measures the average price change in the basket of commodities and service over time. The opposite and rare fall in the price index of this basket of items is called deflation. मतलब किसी भी चीज़ का प्राइस जो होती है एंड सर्विसेज, नॉट ओनली गुड्स दैट ऑल्सो इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑल्सो, तब उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन का टर्म देते हैं. तो हमारे कंट्री में कौन मेजर करता है इन्फ्लेशन को, कि हमारे कंट्री में कितनी महंगाई है. सो इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब विच इज़ चार्ज ऑफ अडॉप्टिंग मेजर्स टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ इकॉनमी. इंडिया में करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो. ये इंडिया में हमारे जीडीपी डेटा को ये रिलीज करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो इन इंडिया इन्फ्लेशन इज प्राइमरली मेजर्ड इन टू मेन इंडाइसेस. पहला होता है हमारा WPI which is wholesale price index, and second one is CPI. So that we can say CPI calculates the difference in price of commodities and services such as food, medical care, education, electronics, and which Indian consumers buy for use. And if you talk about CSO, ये रिलीज कौन करता है डेटा हमारे कंट्री में, दैट इज कॉल्ड NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. CPI कैलकुलेट्स करता है डिफरेंस इन कमोडिटीज़, पहले प्राइस कितनी थी अब कितनी ज़्यादा है, उसको कौन कैलकुलेट कौन करता है, CPI, राइट. और जो उसका बेस ईयर है वो 2012 है CPI का, मतलब 2012 से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है. नाउ जो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, RBI उसको कभी भी मेज़र नहीं करती. रीज़न बिहाइंड, अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो हम इन्फ्लेशन के लिए नहीं यूज़ करते, उसके लिए हम CPI को ही यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स इज टॉकिंग अबाउट ओनली गुड्स, not services, while CPI, consumer price index, is talking about goods and services as well. और RBI को अगर GDP डेटा रिलीज़ करनी है और देखना है कि महंगाई कितनी पहले थी अब कितनी ज़्यादा है, उस केस में आपको CPI टूल्स ही यूज़ करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई पहले RBI WPI यूज़ करती थी मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, अब हम यूज़ करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. नाउ द फर्स्ट थ्री आर कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ आप इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूज़ करती है CPI डेटा को टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, नॉट WPI, मेक श्योर. एंड इट मेजर्स द चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेस और अदर बिजनेसेस. और इसको पब्लिश कौन करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, और यही आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इकोनॉमिक सर्वे को भी लॉन्च करता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. And it is most widely used inflation indicator in India. So it is the general public does not buy product at wholesale price. क्योंकि क्यों है ऐसा, होलसेल प्राइस पर हम क्यों नहीं मेजरमेंट करते हैं इन्फ्लेशन को, क्योंकि कोई एक आम नागरिक, एक नॉर्मल सिटीजन है, वो एक होलसेल प्राइस पे चीज़ों को प्रोडक्ट जो होती है मार्केट में, जो भी कमोडिटीज़ होती है उसको परचेज नहीं करता है, वो होलसेल प्राइस पे उसे नहीं परचेज करता है, कंज्यूमर प्राइस पे करता है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये होलसेल प्राइस वाले के पास कोई चीज़ अगर 8 रुपीज़ की है तो कंज्यूमर प्राइस वाला उसको 10 रुपये में अपने बेनिफिट के साथ 10 रुपीज़ में निकालेगा, उससे बीच में 1 रुपया उसके पास गया, राइट. तो कंज्यूमर यहाँ पे आएगा, कंज्यूमर ना कि इनके पास आएगा. दैट्स वाई WPI को हम मेज़र करते हैं इन्फ्लेशन, CPI को मेज़र करते हैं इन्फ्लेशन के लिए. नाउ यहाँ पे February 15th इस इमेज में आपको देखना है कि दैट इज़ अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर फाउंडर ऑफ आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ऑन हिज सेकेंड बर्थ सिनेटरी February 15, 2023. अब इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ही फाउंडेड इन आर्य समाज. स्लोगन क्या था, स्वदेशी क्रिएटेड नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस. फंक्शन वॉज टू एंड कास्टिज्म, सुपरस्टिशंस एंड टू प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू वुमेन, टू स्प्रेड वैदिक नॉलेज एज वेल. इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे पैदा हुए थे ये, इन तांकरा इन गुजरात इन 1824. फादर थे इनका अंबा शंकर, ऑफिसर थे वो. ओरिजिनल नेम है इनका मूल शंकर. नॉलेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत, मदर टंग इज गुजराती, एंड स्पिरिचुअलिज्म. सो बेसिकली he has devoted he has traveled many parts of the country and for the established the Arya Samaj. Now this is we have discussed already about leverage Jammu and Kashmir lithium reserve. So आपको पता है कि जो लिथियम का हम यूज़ करते हैं, जितने सेल फोन हैं, आपके सोलर पैनल हैं, एंड
वी कैन से सोलर पैनल में भी इसका यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन की बैटरीज में यूज़ होती हैं इसकी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती हैं उसमें हम लिथियम का यूज़ करते हैं। और अभी बहुत बड़ा रिजर्व हमें मिला है यहाँ पे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया यहाँ पे लिथियम रिजर्व, जिसमें 5.9 मिलियन टन्स जो है वो हमें यहाँ पे मिला है रेजी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर। उससे हमारे कंट्री की इकॉनमी बहुत अच्छी होंगी, राइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाकी कंट्रियों में, क्योंकि 2050 तक वर्ल्ड बैंक का ये टारगेट है, 2050 तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रोड पे ज़्यादा मिलेंगी आपको। दैट्स वाई गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है बायोडीजल की चीज़ों को, सो दैट वी कैन से दैट कि यहाँ पे 2050 तक अगर हमें लिथियम रिजर्व जितने भी हैं वर्ल्ड में, क्योंकि हमारी मैक्सिमम डिपेंडेंसी है भी दूसरे कंट्री पर लिथियम को लेके, सो दैट क्या इतना बड़ा रिजर्व मिला है हमारे कंट्री में, सो दैट इससे हमारी एक्सपोर्ट हमारी बहुत अच्छी होंगी। अभी हमने रिसेंटली इसको डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैज़ मोर लिथियम रिजर्व देन चाइना एंड यूएसए। तो चिली यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पोजीशन पे, इंडिया है, अर्जेंटीना है, उसके बाद चाइना, यूएसए एंड कनाडा। इन कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा आपके को लिथियम रिजर्व मिलेंगी। उससे लिथियम रिजर्व क्या है यहाँ पे अभी रिसेंटली मिला है कहाँ पे 5.9, दैट्स वाई इंडिया की पोजीशन अब थर्ड पोजीशन पे आ गई। पहले यहाँ पे देखो, पहले तो वैसे 1 to 5 में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट इस रिजर्व मिलने के बाद हमारी पोजीशन थर्ड आ गई यहाँ पे आफ्टर चिली एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो इससे क्या होगी कि ऑब्वियस सी बात है, वो मैंने बताया आपको लिथियम की यूसेज बहुत ज़्यादा है। नाउ आप देख सकते हैं लिथियम के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। थर्ड एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ग्रे शाइनी नॉन फेरस अल्कली मेटल है ये, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ये। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं, स्कूटर्स होती हैं, उनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है उसमें। क्यों? अगर आपको अपने बहुत मिसयूज़ करा एंड ऑल, क्योंकि उसकी पहली चीज़ तो ये क्या है, बहुत सबसे इसकी लोएस्ट डेंसिटी होती है। लोएस्ट डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम एरिया, राइट। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, मास पर वॉल्यूम एरिया। इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये समझने की जब किसी चीज़ की डेंसिटी बहुत कम होगी तो वो बहुत वनरेबल होगा इन टर्म्स ऑफ फायर की अगर बात करें उसमें तो। और ये बहुत लाइट होता है और लीस्ट डेंस होता है ये। लीस्ट डेंस का मतलब होता है कि इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी वगैरह में आपने आग के केसेस बहुत देखे होंगे, क्योंकि बहुत ईजिली रिएक्टिव होता है ये। आपने अगर गलत चार्जर यूज़ किया ना ऑल, तो उससे भी बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ लेती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, इनमें इलेक्ट्रिक आपकी ईवी आपकी स्कूटी होती है उनमें भी। तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। इसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है इसको। जैसे कि ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, ब्लैक गोल्ड आप कहते हैं कोल को कहते हो ब्लैक गोल्ड, जिसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं। और ये बहुत लाइटेस्ट एंड लीस्ट डेंस मेटल होता है। ये सारी फैक्ट्स आपको लिथियम के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रिजर्व मिला है जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको वी शुड नो अबाउट द फैक्ट्स अबाउट द लिथियम। आई होप दिस वन क्लियर फॉर ईच एंड एवरीवन। नाउ वी मूव फर्दर। What are MicroLED displays and why it is Apple shifting to it? So how the MicroLED LED का मतलब क्या होता है? पहले तो ये इसके बेसिक nitty-gritty of the things we should know about it. LED which means light emitting diode. Light emitting diode. So इसमें हमें ये समझना होगा कि माइक्रो ईडी टेक्नोलॉजी जो है, how it is different from screen display technology and what is the कैप्चर बेस्ड कंपनी जो है, इसको हम क्यों एप्पल इसे क्यों यूज़ करना चाहती है। अभी एक एमोलॉयड डिस्प्ले हम यूज़ करते हैं मोस्टली अच्छे जो आपके प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। सो ये होता क्या, पहले माइक्रो एलईडी डिस्प्ले समझने की कोशिश करते हैं इसे। माइक्रो एलईडी का मतलब है यहाँ पे विच इज़ कंसिडर टू द नेक्स्ट बिग थिंग इन द डिस्प्ले इंडस्ट्री। माइक्रो एलईडी जो होती हैं दैट इज सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड्स दैट हैव ब्राइटर एंड बेटर कलर रिप्रोडक्शन देन ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड OLED, राइट। सो माइक्रो एलईडी का मतलब होता है, माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी को हम बेस्ड करते हैं यूज ऑफ सफायर्स विच इज नोन फॉर देयर एबिलिटी टू शाइन ऑन देयर ओन एंड indefinitely, and the technology involves the use of tiny light emitting diodes LED that are packed tightly together and create a brighter and high quality display. और जो माइक्रो एलईडी होती है वो बहुत छोटी होती हैं, as cutting to centimeter of hair into 200 smaller pieces, right? So each of these micro LEDs are semiconductors that receive electric signals, and once these micro LEDs are gathered they form a modules, and बहुत सारे जो modules होते हैं that is combined to form screen. Now fossils in time, the next article talking about, इसमें GSI के बारे में बात की गई है कि यहाँ पे एक बिल पास किया गया इसमें विच इज़ कॉल्ड ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022।
सो इस ड्राफ्ट बिल में एम्ड क्या प्रोटेक्टिंग इंडिया जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट दैट इंक्लूड्स फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो GSI है which is attached to Ministry of Mines and set up in 1851 में इसको सेटअप किया गया था primarily to find coal deposits for railway, क्योंकि आपको पता है उस टाइम में इंडिया में जो कोल से आपको जो ट्रेन्स होती थी वो चलती थी, इसीलिए उसको हमने क्या किया था, ये हमने इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने, राइट, GSI को। इसके हेडक्वार्टर्स अभी एट प्रेजेंट कोलकाता में है और उसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, and it is the scientific agency of India to carry out geoscientific activities. Nothing more need to understand in this article. Now, Ladakh, a fragile region, needs autonomy. So in this article basically is talking about क्या क्या 6 शेड्यूल में बात हो रही है, डिमांड हो रही है यहाँ पे कि 6 शेड्यूल में जाने के लिए। What exactly is 6th शेड्यूल, क्या कहता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल, विच वी शुड नो अबाउट इट। सो नॉर्मली जो है यहाँ पे जो पीसफुल रेसिडेंट्स हैं लद्दाख के आर एजिटेशन मोड, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल्स पॉपुलेशंस ज़्यादा है, सो दे डिमांड कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या कहता है, दैट एनेबल्स लोकली डिटरमाइंड पाथवेज दैट कैन हेल्प अवॉइड डिजास्टर ट्रैक दैट मे अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव ट्रेड। इसमें एक चीज़ समझना होगा कि लद्दाख में 6th शेड्यूल में डिमांड की बात क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पे पहले ही आता था AHDC के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स क्या होता है, ये जो हिली एरियाज़ हैं, क्योंकि आप देखें इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें कि 1995 में लद्दाख हैज़ एन AHDC, 55 की बात हो रही है, विद द एम ऑफ इनेबलिंग लोकली डिटरमाइंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे उसके बाद 2019 में इसकी चीज़ें चेंज हुई वहाँ पे। अब इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 6th शेड्यूल में जाने की बात क्यों हो रही है, एंड वाई आर द पीपल ऑफ लद्दाख डिससेटिस्फाइड विद द रीजनल स्टेटस जो उनको मिला हुआ है, रीजन के स्टेटस मिले यूनियन टेरिटरीज में। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीज़ें क्या होती है। सो यहाँ पे रिसेंटली डिमांड किया गया पार्लियामेंट टू इंक्लूड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफगार्ड लैंड, एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। सो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया टू बाइफोकेट द स्टेट इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर। लद्दाख में क्या है, विदाउट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब यहाँ पे इनकी अपनी जो स्टेट की असेंबलीज होती हैं वो नहीं होंगी। एंड नीड टू इंक्लूजन ऑन 6th शेड्यूल में क्या है, क्या चीज़ें होनी चाहिए 6th शेड्यूल में जाने के लिए, क्राइटेरिया क्या है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख रीजन नाउ कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, राइट, बिकॉज यूनियन टेरिटरीज में क्या होते हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं अगर उसमें लेजिस्लेचर है, तो जैसे आपको मैं बात करते हैं दिल्ली की, बात करते हैं यहाँ पे पुदुचेरी की, वहाँ पे स्टेट विथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, तो जहाँ पे उनकी असेंबलीज हैं, इट मीन्स दैट वहाँ पे आपका नॉट कम्प्लीटली आपका वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज आप उसे नहीं कर सकते, स्पेशल ऑर्डर्स हैं उसमें, स्पेशल पावर्स हैं स्टेट्स के पास। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कि अगर बात करें यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट होती है, इसीलिए इसे हम ब्यूरोक्रेट्स की कहते हैं कि दैट इज़ नाउ कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। सो द गवर्नमेंट नाउ लुक्स इवन मोर डिस्टेंट दैन श्रीनगर, और इसमें डोमिसाइल पॉलिसी को भी हमने चेंज किया। डोमिसाइल का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझें कि जो स्टेट में जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ पे, जो सिटीजन हैं वहाँ पे, उनके पास उस एरिया का वो उस एरिया में रह रहे हैं, वो उनके पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, राइट। So the change domicile policy in Jammu and Kashmir has raised fears in the region about own land, like employment, demography and cultural identity. So UT has 2 hill council, पहला लेह and Kargil, but neither is under the 6th schedule. 6th schedule में जाने के बाद गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोटेक्शन करती है उनको। So just a second, yeah. सो गवर्नमेंट में क्या करेगी, वहाँ पे उसकी वहाँ की एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा ध्यान देगी, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए ध्यान देगी, जो लोकल पॉपुलेशन है उनके पास ज़्यादा ध्यान देगी। तो यूटी और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस हो जाएगा, इट मीन्स दैट कि यूटी से वो वहाँ के लोग खुश नहीं है, दे डिमांडिंग कि 6th शेड्यूल में आप उसे करो। 6th शेड्यूल में जाने के बाद जितने भी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें उस स्कीम्स में क्या होती है कि आपको चीज़ें वहाँ पर आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, तो बहुत कम कॉस्ट का आपको स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होता है। दिस स्टोरी द अडानी स्टोरी एंड इंडियन न्यू लिबरलिज्म, तो इसमें आपको जो स्टोरी है इन शॉर्ट वही है कि आपको अभी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद जो चीज़ें कोलैप्स हुई, बहुत डिटेल में हमने इसे कल के सेशन में डिस्कस किया हुआ था। सो नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे। हियर इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द
collective and individual powers and privilege of the House of Parliament and their committee. Article 104, Article 105, Article 106, Article 107. Cheshta Kurana, option B, 105 is completely fine. Cheshta, very well done. B is the right answer. So Article 105 of the Indian Constitution, it deals with the powers and privilege of the House of Parliament, and there shall be freedom of speech in Parliament. So members of Parliament are exempted from any legal action for any statement made or act done in the course of their duties in Parliament. Now, Nord Stream 2 is an export gas pipeline running from Russia to Germany, Russia to China, Europe to North America to Japan. Option A, Russia to Germany. Very quick answer. Well done, Cheshta. So option A is the absolutely correct answer, Russia to Germany. So as we can see, Nord Stream pipeline from Russia, that we can see in the map, Russia to Germany. Third one, the bridge Maitri Setu has built over the Mahakali River, Brahmaputra River, Barak River, Feni River. Option D. So D is the right answer, Feni River. So the bridge Maitri Setu has been built over the Feni River, which flows between Indian boundary in Tripura and Bangladesh. Now fourth one. He was the first to give the call for Swaraj as India for Indians. The President of India, S. Radhakrishnan, called him one of the makers of modern India, as D. Shri Aurobindo he was. Dayanand Saraswati, Gopal Krishna Gokhale, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal. A very quick answer, Cheshta. Option A, yeah, Dayanand Saraswati is the right answer. So he was the first to give the call for Swaraj as India for Indians in 1876. A call later taken up by Lokman Tilak. He believed in infallible authorities of the Vedas. And Raja Ram Mohan Roy, the makers of modern India, considered to be father of Indian Renaissance. This multifaceted social, religious and educational reformer is renowned for this pioneering role in opposing practice like sati, child marriage and social division of and advocating education. And here is the last question of the day. Is Tarkash is a joint military exercise between India and which country? US, Sri Lanka, Japan, Russia. So US is the right answer, option A. So there is an ongoing Indo-US joint exercise Tarkash by the National Security Guard NSG and US Special Operational Force SOF has now for the first time included chemical, biological, radiological and nuclear terror response in its drill. So this was an explanation, and this is all about the session, dear student, and I hope that you enjoy the session a lot. If you have any questions regarding this session, please let me know in the comment section. And one more thing, if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. And I hope you enjoyed the session a lot. अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे. Bye bye and take care. We'll meet you tomorrow at the same time. Thank you so much for joining with us.